warm welcome to the grand finale and awards ceremony of Mission Impact. India is home to nearly 2 million social enterprises, which is a staggering number. But the real story lies in the lives they touch. Farmers shielded from climate shocks, women claiming financial independence, children learning without barriers, inclusion for the marginalized, and communities reclaiming dignity. So Mission Impact, a landmark collaboration between IDFC First Bank and NDTV, was created for one purpose: to shine a spotlight on those who quietly confront India's toughest challenges. These are individuals and organizations who don't wait for change, but rather they build it day after day, district after district, using innovation to solve real problems at scale. So tonight, we felicitate 14 extraordinary social entrepreneurs featured on Mission Impact. They come from different geographies, work across diverse sectors, yet they share a single belief that purpose-driven innovation can move India forward one community at a time. Mission Impact was created to shine a light on a different kind of entrepreneurship. One where success is measured not just by skill or speed, but by the depth of change created on the ground. Across this journey, we met social entrepreneurs who have chosen action over comfort and responsibility over recognition. People who didn't wait for perfect conditions or perfect systems. They started where they were, with what they had, and have stayed long enough to see change take root. Today, they are addressing real challenges with empathy, innovation, and persistence. From early intervention and inclusive access to community-led solutions that restore dignity and create opportunity, their work is quietly reshaping lives across India. Mission Impact brought their stories to the forefront, not as inspiration alone, but as proof of the impact social entrepreneurs can achieve through patient effort and long-term commitment. Tonight, we recognize and honor the people behind the impact, the social entrepreneurs who didn't wait for change. They made it happen. I would now like to invite on stage Shikha Hora Kamdar, President, Retail Banking of the IDFC First Bank, to deliver the keynote address. Good evening, Shri C.R. Patilji, our Honorable Union Minister for Jal Shakti, distinguished guests, and the extraordinary entrepreneurs gathered here today. Shri Patilji, we are deeply grateful for your vision and leadership in accelerating water conservation, sanitation, and sustainable infrastructure for our nation. And it is truly our honor to have you with us tonight. Thank you, NDTV, for creating Mission Impact, a platform that celebrates not just success, but purpose, courage, and nation building. Tonight, I want to begin with a line by Paul Polman that captures why this gathering matters so deeply. Businesses cannot succeed in societies that fail. It's a simple line, yet very deep, with a very deep meaning and yet very powerful. Because growth without inclusion and innovation without access is really incomplete. And that's why tonight we are here celebrating catalysts for real change. Entrepreneurs, as we all know, are the building blocks of any economy. And for us in India, over 6 crore MSMEs are contributing to over 30% of our GDP and employing millions of people across the country. But within this vast universe, social entrepreneurs play a uniquely transformative role. They don't just ask how much this business is going to grow or how much money it's going to make. They ask something more profound: how many lives this can impact. This is the essence of inclusive growth, progress that reaches the last mile. Growth with dignity. Today we have one of the best digital infrastructure rails in the world, and this did not happen by accident. It happened because policy, platforms, and purpose aligned, supported by very forward-looking regulators like RBI, SEBI,
and a strong platform and ecosystem player like NPCI, and with a government that had a strong vision and invested early in digital public infrastructure. With multiple digital public infrastructure and financial inclusion initiatives such as JAM Trinity, which is Jan Dhan, Aadhaar, mobile access, startup ecosystem support through funds for startups, Startup India Seed Fund, credit guarantee scheme for startups. There have been initiatives around MSME and entrepreneurship finance schemes such as Pradhan Mantri Mudra Yojana, CGTMSE, CGFMU, which is expanding credit access by expanding institutional lending to small businesses and startups. And now Unified Lending Interface is coming up, which is a forthcoming digital platform to streamline credit access for small and rural borrowers by stitching multiple data sources for faster credit decisions. With such powerful digital rails in place, institutions like banks have an extraordinary responsibility. We all know that access to finance creates a multiplier effect. Access to finance for social entrepreneurs amplifies it even further, and banks can play a key role here. At IDFC First Bank, we have a deep sense of purpose. Our core ethos are social, digital, and ethical. For us, impact is not peripheral. It is central and core to our business model. We are leveraging these rails to back nation-building entrepreneurs at scale through startup banking, MSME banking, rural credit, women-focused lending initiatives, and green financing initiatives. Our startup banking initiative called First Wings has products customized for startups and entrepreneurs with working capital finance, current account with zero AMB requirement, corporate credit cards, working capital finance, and networking platform with access to mentors across the industry. Our MSME offerings include robust trade, FX, remittance propositions, along with working capital finance and lending for MSMEs. We are present in over 60,000 villages across rural India to serve those customers. Our products like consumer durable finance, two-wheeler finance, three-wheeler finance, commercial vehicle finance, extend livelihood financing, as well as financing for micro-enterprises. We focus on 5 priorities: designing for the underserved, using artificial intelligence responsibly to widen access, supporting women-led and first-generation founders, green financing, which is financing of electric vehicles, sanitation, sustainable agriculture, renewables apart from green deposits, and partnership with social enterprises, not forcing legacy templates. Through this approach, IDFC First Bank has financed 3.6 million women entrepreneurs, 2.5 lakh electric vehicles, 2.7 lakh water and sanitation loans, and over 2 million cattle owner livelihood loans. With inclusive banking and supporting entrepreneurs, while it's very core to us, our CSR platform, First Impact, reflects our social good promise of empathy, equity, and transparency. Through 57 programs across India, it has now touched almost 1 crore lives. We are supporting digital-first innovations in health, livelihoods, education, environment, and climate resilience. Today, I want to talk about 3 of our initiatives which illustrate what kind of multiplier impact our First Impact program is creating. The first one is Ignite, our inclusion program with IIT Delhi and IIT Bombay, which supports early stage social enterprises in deep tech, clean energy, health, climate, and AI for good. Over the last 2 years, First Impact has supported 52 impact-driven startups in total. Our portfolio includes enterprises creating measurable impact in environment, clean energy, healthcare. Our second program is a flagship program called Shwet Dhara, which operates across 880 villages, supporting over 50,000 households, empowering women dairy farmers through scientific practices. Our Ek Prayas initiative is for inclusion for children with developmental disabilities, which is strengthening the grassroots NGOs to provide early diagnosis and therapy apart from helping them remove the stigma. These are the platforms which are creating generational change for us through our First Impact initiative. Today, what fills me with pride is seeing how social entrepreneurs are using the national DPI rails and such enabling initiatives by ecosystem players like us for last mile impact. Tonight, we honor organizations and individuals who've been the change makers. It's so delighting to see the impact you all are making in very diverse areas.
While going through the list of people who are being recognized today, I was quite impressed to see that there were agri-tech players who are leveraging drone technology for precision spraying, seeding, delivering affordable modular greenhouse solutions tailored for small farmers. We have people who are doing sustainability offerings, very interesting, around transforming lotus stems into eco-friendly hand-woven fabric. We have clean tech startups producing ethanol-based biofuels aligning with India's national drive for sustainable energy. We have today amongst us companies in affordable healthcare, improving healthcare access for rural and underserved communities through smart portable devices. I was very interested in reading about one which is connecting acoustics, heart and lung sounds into visual signature pattern. There was one more company enabling women to collect samples at home for testing cervical cancer. Someone is tackling waste management through composting and recycling, creating a zero landfill model. One company is developing robotic solutions to eliminate manual scavenging, restoring dignity and safety for sanitation workers. There is a social learning platform that I saw, which is designed to make quality education accessible and inclusive. One company is developing robotic solutions to Ek-Prayas, of course, we spoke about, which is early intervention and inclusive education for children with developmental disabilities. Shwet-Dhara, our initiative which we spoke about, which is for empowering rural women to become micro-entrepreneurs in dairy farming. Very interestingly, there was one founder who's having a patented process to turn chicken butchery waste into sustainable fiber for textiles, handling an eco-friendly alternative to wool. Each of them proved the same truth: when innovation meets empathy, scale follows. You all have proven that the purpose of business is not to make money, but to create value, to build organizations with the soul. You all are engines of dignity and economic integration. You're constructing an India where opportunity is not a privilege, but a promise. To all of you who are getting recognized today, congratulations and a heartfelt thank you. To every founder quietly transforming villages, classrooms, and communities and not present in the room tonight, this celebration and recognition belongs to you too. Your unwavering belief to transform the country is reshaping beliefs and lifting the communities. Your purpose-driven leadership is truly inspirational. Thank you, NDTV, once again for amplifying this movement. I would like to close with a famous line that captures the spirit of every person in the room tonight. जो नई राह बनाते हैं, वो इतिहास रच जाते हैं. Thank you, ladies and gentlemen, and have a fabulous evening ahead. It is now my honor to invite on stage Shri C.R. Patil, Union Minister for Jal Shakti. He will be in conversation with NDTV's Akhilesh Sharma. ये तो हम सुनते आए हैं हमेशा कि जल ही जीवन है, और आपको ये जानकर के हैरानी भी होगी कि जल को लेकर के भारत में, स्वतंत्र भारत में हम बात करें तो जो प्राथमिकताएं थी उनको तय करने में काफी समय लगा. एक लंबा सफर भी इसके लिए तय किया गया. जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की है, और हमारे साथ जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल साहब हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर C.R. पाटिल साहब. तो जो बात मैंने शुरुआत की थी कि जल ही जीवन है, तो ये जीवन का अंग हमेशा बना रहे, बचा रहे, सबको मिलता रहे, इसके लिए आपका मंत्रालय क्या कर रहा है? हमारे देश में कभी भी पानी की किल्लत नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश में करीब 4000 BCM बारिश होती है. हमारी आवश्यकता है 1120 BCM की. विकसित भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की है, वहां तक भी हमारी आवश्यकता सिर्फ 1180 BCM की है. 6526 से ज्यादा हमारे पास डैम होने के बावजूद हमारी टोटल जल संचय करने की कैपेसिटी सिर्फ 750 BCM की है. और ये जो प्रॉब्लम हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है, 750 BCM के ऊपर लगने वाला हमारा जो पानी है करीब 370 BCM, उसके लिए हम जमीन में से पानी निकालते हैं
और वही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस बात को समझते हुए 6 सितंबर 2024 को एक वर्चुअल मीटिंग में कहा था कि जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए। मुझे आपको बताने में आनंद हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर करीब 40 लाख स्ट्रक्चर ये 10 महीने के अंदर बने हैं और उसमें मंत्रालय की ओर से अभी तक एक भी रुपया हमने खर्च नहीं किया। जो एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बहुत ध्यान दे रहे हैं वो है हर घर जल योजना, जिसमें कि हर घर तक, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, ताकि महिलाओं को जो समय लगता है, जो असुविधाएं होती हैं, वो ना हो और हर घर तक जल पहुंच जाए। उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि बीच में कई सारी रिपोर्ट्स उसको लेकर के आई है। 9 लाख महिला रोज पानी लेने के लिए दूर तक जाती थी। जाने में, आने में और बोझ उठाने में उनको करीब 4.5 करोड़ घंटे ये रोज खर्च होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये नल से जल की योजना के कारण करीब 16 करोड़ घरों में शुद्ध पानी आना शुरू हुआ। WHO का रिपोर्ट कहता है कि हर साल करीब 60,000 बच्चे की मौत होती थी। पहले ही 5 साल के अंदर करीब 3 लाख बच्चों की मौत रोकी गई है, उनको बचाया गया है। हर घर में आने वाला जल वो शुद्ध है या नहीं है, उसके लिए अलग अलग गांव में 4 से 5 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। 24,80,000 महिला उनके घर में या उनके गांव में आने वाला पानी कौन सी क्वालिटी का है वो चेक कर सकती है। उसके लिए उसको किट भी दी गई है और करीब 8 लाख महिलाओं ने अभी तक उसका रिपोर्ट, पानी सही है या गलत है, उसका रिपोर्ट भी पोर्टल पे अपडेट किया है। एक अंतिम प्रश्न आपसे, क्योंकि एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे कि देश भर की जो नदियां हैं उनको आपस में जोड़ा जाए, ताकि जो इलाके जहां पर की पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक पानी पहुंच सके। उस दिशा में आपकी सरकार ने, आपके मंत्रालय ने क्या प्रगति की, अगर इस बारे में आप बता सकें। रिवर लिंकिंग ये माननीय अटल जी का सपना था। अटल जी कहते थे कि तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरह से काम किया, रिवर लिंकिंग का पहला प्रोजेक्ट गुजरात में नर्मदा से आने वाला पानी बाकी नदियों में डालकर कच्छ तक पहुंचाया। रास्ते में आने वाली सभी नदियां, सभी डैम, उसके अंदर पानी डाला गया और किसानों के लिए भी पानी की व्यवस्था की। तो रिवर लिंकिंग का पहला प्रोजेक्ट गुजरात में हुआ। दूसरा प्रोजेक्ट केन बेतवा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में हुआ, जिसके अंदर 10,62,000 हेक्टेयर जमीन को एग्रीकल्चर के लिए पानी मिलेगा और 62 लाख लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा। करीब 44,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा हो जाएगा। दूसरा रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में हो रहा है। करीब 77,000 करोड़ से बड़ी लागत के साथ एक बन रहा है। उसके अंदर भी 10 लाख हेक्टेयर जमीन और 50 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। ये प्रोजेक्ट का भी काम चल रहा है, उसका DPR भी बन गया है। दोनों स्टेट के बीच में MOU भी हो गया है और मुझे लगता है कि आने वाले यही दिसंबर के पहले वहां पर भी काम शुरू हो जाएगा। तीसरा जो हरियाणा से आने वाला जो सरप्लस वाटर था, उसको भी पाइपलाइन से राजस्थान को देने की एक योजना बनी है, उसका भी DPR हो गया, दोनों का MOU हो गया है स्टेट का। राजस्थान में आज सबसे कम पानी है, मगर आने वाले दिनों में राजस्थान के पास सबसे ज्यादा पानी होगा। इस तरह की योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब बना रहे हैं। उनकी जो दूरंदेशी होती है और उनका जो विजन है कि ये पानी की किल्लत, हमारे पास इतना पानी के होने के बाद पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने एक जल संचय जन भागीदारी का जो प्रोजेक्ट दिया था, उसी के अंदर हर गांव में पानी, हर खेत में पानी, तो गांव का पानी गांव में ही रुक जाए, वही उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरिए अंदर उतारा जाए और खेत में भी 1 हेक्टेयर में अगर 4x4x6 का एक खड्डा करके उसके अंदर हम ग्राउंड डाल देते हैं
तो बारिश में 3-4 लाख लीटर पानी वो 1 एकड़ में जमीन में उतर जाता है। तो गांव में या खेत में लगने वाला पानी उसी में से मिल जाएगा, उस तरह की कोशिश वो कर रहे हैं। अब पूरे देश के लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से काम भी कर रहे हैं और इस काम में जुड़ भी रहे हैं, मगर हम जन जागृति होगी जी, हम तय करेंगे कि नदी गंदी नहीं करेंगे। नदियाँ एक आर्थिक उपार्जन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इस बात को अगर ध्यान में रखकर सब काम करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा और जरूर आएगा, ऐसा मैं विश्वास से कह सकता हूँ। धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत ही अच्छी पहल आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।